So time for your exam is already declared this year. हमरो 31st of January 2026 रे हमरो exam start होचे. It will last up to 10th of February. पाखापाखि 11 दिन एग्जाम हबो यूपीएससी स्टाइल रे होचे. एंड ओडिया और इंग्लिश हमरो फर्स्ट दिन अछि. ओडिया इंग्लिश हमरो 3 घंटा एग्जाम हबो. ओके 9 AM to 12 AM अगेन 2 AM to 5 AM भलो हला गैप अछि. इससे पूर्व गोटे दिन गैप अछि. ओके देन तमरो जनरल स्टडी 1 जनरल स्टडी 2 पूर्व गोटे गैप अच्छी जनरल स्टडी 3 और जनरल स्टडी 4 गोटे दिन गैप अच्छे. तो यहीटा सब बढ़िया जिन गैप टे मिलगला एथर. ओके मझे 3 days गैप अच्छे ऑप्शनल गैप. जी जा ऑप्शनल बहुत ही इंपोर्टेंस दियो. बिना ऑप्शनल इंपोर्टेंस तुम एग्जाम क्लियर हम ना. ओके जी जा ऑप्शनल रखिच एबेठू. सो आज है तुम 13 तारीख. ओके 12 तारीख डिसेंबर 12. ओके तो तुम पाखे मोटामोटी आउ मासे पर तुम एग्जाम सरी जाइथिबो. आउ मासे पर सॉरी आउ 1.5 मास पर तुम एग्जाम स्टार्ट हबो. आउ 2 मास बेलू तुम एग्जाम ही सरी जाइथिबो. ओके सो दिस इज द क्रुशियल टाइम. जे माने लागु जे पढ़ापढ़ी करिनो तो एबे टिके टाइट कर दियो. नोट फोट होपफुली तुम बने सारथिबो. आ आम पिला जे सेटा भलो कथा कि हमरो ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमरो गोटे राउंड कोर्स सरलानी. ओके खाली एथिक्स टिके बाकी अछि जोडा चली छै एबे. ओके एथिक्स में टेंशन नियोनी. एथिक्स बहुत इंपोर्टेंट. एथिक्स तास एथिक्स भी करबा प्लस आ जीएस 1 2 3 आ एसए. ओके हमर ऑलरेडी 10टा एसए लेखा सरजी समस्त. आ मु 8टा एसए अपलोड कर जेती मोर मन अछि हला. आ एप्लीकेशन रे मु और 2टा भी एसए अपलोड करछि. तमे जहां मु एसए दोछि ताको स्टिक करो. जहां मु कंटेंट देछि से कंटेंट गुड के नोट बने की ताको प्रिपेयर करो. ता सहित एबे हमर गोटे राउंड सरी गला. ओके जीएस 1 2 3 मु कोन करबी जो लेफ्ट आउट टिके पोर्शन अछि ओडिसा हिस्ट्री. ओके देन तमरो रहला हिस्ट्री पार्ट. ओके मॉडर्न नाउ एंशिएंट हिस्ट्री जोडा कि हमरो ऑलरेडी जो प्रीलिम डेली डोज बैच हम करथिले सेटा भी एबे भी हेल्पफुल हो. ताकू डी रेफर करि परिबो. ओके यू कैन एक्सपेक्ट नियरली 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री हला. अगेन 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी एंड 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम सोशल जस्टिस हला. एई परिमाण रे आर्ट एंड कल्चर सब मिसे के तुम आसो टोटल 17 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अटेंड करिया रहस तुमको. ओके जो फॉर्मेट रे आगु होतले से टाइप रे कहया गले. सो दिस टाइम तुमको टिके सिलेबस को आथरे देखिया पड़ी. गो थ्रू द सिलेबस. ओके गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टिके जीवो आथरे देखिबो जेमि मो पढ़ाए सब जिंस. ता सहित तुमको देखिया पे पड़िबो. शेड्यूल सहित तुम गोटे निजर शेड्यूल बनाया पे पड़िबो. ओके आम पिला को टेंशन दरकार नै तुमको काई ना हमरो ऑलरेडी गोटे शेड्यूल रे हम जाउछन्ते. ओके आमे प्रथमे पेपर 1 सरले पेपर 2 रो किछि पोर्शन देन पेपर 1 2 सब सरले देन पेपर 3 वर्तमान करछन्ते. ऑलरेडी हमरो इकोनॉमी एग्रीकल्चर रिसर्च जिंस सरीछि. बर्तमान आम स्टार्ट करिया साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी. अगेन दीटा मिसे कि तुमको पाखापाखि तुम 7टा रु केते पाखापाखि 7टा क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर परिबो. ओके काहे ना इकोनॉमिक्स मु कहली इकोनॉमिक्स भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन से दोउचंती हला. 7टा रु 8टा क्वेश्चन खाली इकोनॉमिक्स में दोउचंती इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर. ओके 10टा क्वेश्चन भी पके पारंती. सेतिरे बजेट भी रहइबो. ओके सेतिरे तुम स्कीम्स भी रहउची. सेतिरे तुमरो एग्रीकल्चर पोर्शन भी रहउची. सेतिरे एनवायरनमेंट तक सेति सरला पर तुम एनवायरनमेंट पोर्शन अछि. एनवायरनमेंट से तो डिजास्टर मैनेजमेंट तुम देखिलो या भी डिस्कस करछन. एनवायरनमेंट तुमरो मु कहितली. अच्छा एनवायरनमेंटल लेजिस्लेशन ऊपर जो नोट तुम शेयर करी मु गोटे पर्सनली कर देबी. सेटा भी तुम पाई जो सब जगह किंतु ताको हम एक्सटेंसिवली डिस्कस करिना. ओके जो पोर्शन बाकी रहिला इट इज माय ड्यूटी नेक्स्ट 15 डेज सेति मु कवर करबी. तुम काम कोन हला जति क्वेश्चन आंसर मु करैछि ताको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिकि ना सेगुडा उठी बाय हार्ट करो फर्स्ट. सेकंड हला जो जिनस बाकी रही तार नोट गुड़ा बन तुम शेयर करी है. मुझे जानी शुणी एक्सट्रा नोट्स गुड़ा दौनी देले कंफ्यूजन हम बेसी पाठ रे किछि हेबनी. तुम जेति पढी ताको ठीक से रिप्रेजेंट करके आस सेटा बड़. मैप केमति ड्रॉ करिवो ड्राइंग को डायग्राम करिवो एबेठू माइंड रे सेडा भर दियो. ओके सपोज क्वेश्चन आसिला हमरो if you are receiving a question on internal security तमरा आछे. ओके एनडीपीएस तमरा नॉन साइकोट्रोपिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जोड़ा अछि. ओके तो तुमको तापाई नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जदी आसीगला ता ऊपर तो ताको केमति लिखियो ता प्रोविजन पचारछि किबा तार डिसएडवांटेज पचारछि किबा तार बेनिफिट्स पचारछि कि तार इफेक्टिवनेस केते रहला पचारछि. तो ताको ने कि तुम केमति डायग्राम ड्रॉ करिवो. ओके तो ताको आई विल शो यू इन माय सब्सिक्वेंट क्लासेस के किछिटा डायग्राम किछिटा तुमको वैल्यू एडिशन पॉइंट्स किछिटा डाटा रिपोर्ट फैक्ट एगुडा देबी ए वर्ष पय जेटा एप्लीकेबल हबो. तो से भलिया क्वेश्चन जदी आसिला तुम संगे संगे से डाटा फैक्ट जतो देई परिबो. ओके आउ इंट्रोडक्शन
कंक्लूजन ए सब पई सफिशिएंट पॉइंट्स तुम निजे पाखे रखि था सपोज इन ए पेपर GS3 की GS2 तुम जदी लिखुछ यू हैव टू राइट 15 क्वेश्चंस और 15 आंसर्स इन 15 आंसर्स you should have 5 types of introduction and conclusion points aguru dhari ki jaithibo okay I have already shortlisted the important topics सब कहि कि तुम देइछि मु सेई थीम रू ही क्वेश्चन आसीबो रिपीट आसीबो ओके आ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जोडी छाडतले सेटू बे स्टार्ट करिवे आ तमरो मूल हला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तमे आगुरु तमे कोन करथिबो भल से देखि ताहले जाकिन तमे नेक्स्ट एग्जाम पे रेडी हो पारिबो ओके तो जेतु गोटे गोटे दिन गैप अछि ताको ने माइंडसेट करो कोटा आगो पढिबो कोटा आगो सारिबो ओके जेमति हमर अछि फर्स्ट आवर हमें जीएस को दोचंदी सेकंड आवर हमें ऑप्शनल गुदा पे हम कहिछि सेटा को तमे स्ट्रिक्टली फॉलो करो आ सब पेपर रे तमे लेख बहुत सारा आंसर लिखि कि इवैल्यूएट करेले तमे जानि परिबो कि तमरो वीकनेसेस कोन अछि स्ट्रेंथ कोन अछि हला जदी तमे इवैल्यूएटर को थके दोनो ताले तमरो लेखु न हला यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड आउ 50 दिन तुम लाइफ रे सब बेस्ट 50 डेज मिले हबो सब इंपोर्टेंट 50 डेज एटा वंस तुम ए 50 डेज डिसाइड करिवो तुम पुनी आउथरे लेफ्ट आगो को कोन तुम फ्यूचर हबो ओके आउथरे प्रिपेयर करिवो ना एटा को एंड करिवो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अछि एथरो कंपटीशन कम अछि एसएससी रे बहुत पिला क्वालिफाई हेचंती जो माने कि मेंस पे दे आर नॉट वेरी मच रेडी ओके तो तुम माने सब क्वेश्चन रो आंसर ओके जो क्वेश्चन तुम डाउट होची शेयर मी ओके मते डायरेक्ट शेयर करो समस्त पाखा नंबर अछि तार आंसर हमें डिस्कस करबा क्लास रे डिस्कस करबा किबा पर्सनली डिस्कस कर देबी आंसर लिखुछ आंसर भी शेयर करो समस्त आंसर टिके टिके इंप्रूवमेंट रहबार अछि टिके टिके कोन बहुत इंप्रूवमेंट होबार अछि तो ताकू जेमति हला फॉर एग्जांपल हैंड राइटिंग सेकंड हो जे तमर अलाइनमेंट थर्ड हो जे तमरो टाइम रे सारिबा हला एंड फोर्थ हो जे तुम डरुछ बहुत कंटेंट रे बहुत कमी रहला बडा डरुछ तो एई सब जिंस को ओवरकम करिया पड़िबो हला जो जो टॉपिक रे तुम सपोज कमी रोची कंटेंट मते कहो कि मोर गवर्नेंस रे किसी दरकार नोट तो आई विल शेयर यू गवर्नेंस नोट तापर तमरो विभिन्न इंस्टीट्यूट माने भी शेयर करचंती बहुत सारा नोट तांकर अछि हला टिके टिके शेयर करी बाहर चलो गवर्नेंस रो पुनी पांचटा क्वेश्चन आसीबो ओके सोशल जस्टिस रो क्वेश्चन आसीबो तमर पॉलिटी रो क्वेश्चन आसीबो तो तुम डाइवर्स एरिया रो क्वेश्चन आछी तुम यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट सम 5-6 क्वेश्चन गोटे गोटे टॉपिक रो दरकार 5-6 क्वेश्चन पेंगना तुम सफिशिएंट जदी डेटा फैक्ट्स पॉइंट्स रखि देला देन होपफुली तुम इजीली अबिका डेट रे मते खाली कहो जदी एग्जाम होउची ओके एमिति तो नाही कि ब्लैंक छाडी आछो एवरीबॉडी जति हम क्लास रे अछ समस्त मते कहो जदी एग्जाम होउची जे दिन हैला मासे ऊपर जो माने करूचो सेशंस ओके जस्ट लेट मी नो जदी एग्जाम हैला जो माने सब आंसर माने एटलीस्ट यू विल फेस द एग्जाम सेती कॉन्फिडेंस का भीतर अछि जणे दी जण एटलीस्ट आई विल फेस द एग्जाम क्लास ना पठे दो गोटे सेकंड yes at least you will face the exam right now okay गाई जो क्वेश्चन ऊपर किसी भी आइडिया नथिबो जेंती लास्ट टाइम पकेटला ओटे साइबर स्लैबरी सेही भलिया क्वेश्चन को केमते डील करिवो ताको ढाबा मारिया पड़िबो इफ यू डू नॉट नो साइबर माने कोन जानिचो स्लेवरी माने कोन तुम जानिचो से दीटा को काइने दिस इज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी यू नो इट ओके साइबर सिक्योरिटी पर जहा पड़ियो तुम सेट लिखि आसे पड़ियो तुमको बुझिलो सेमिति क्वेश्चन तुम छाड़िबो ताहले छाड़ी दे पारिबो ना किछि यू डू नॉट हैव द लिबर्टी टू लीव एनी क्वेश्चन बुझ परछो यू नो इट्स अ टॉपिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी इट इमर्जिंग प्रॉब्लम एमिति कि तुम लिखि आसे पे पड़ियो एट नोट मो डॉक्टर मोबाइल मोरो ये जो सिलेबस रो नोट बनेवा कथा कहउछंती माने जते ओडा कीवर्ड्स ओडा अछि सबुर 5-5टा की माने इंपोर्टेंट इंट्रो एंड कंक्लूजन लिखि के एंड तार डाटा फैक्ट्स ओडा माने प्रत्येक कीवर्ड रो 250 वर्ड रो माने थिबार अछि कंटेंट ऑलमोस्ट मो देई छी हला ती क्वेश्चन देई छी तम बाकर किछ किछ जिंस अछि तुम ताकू भी जो से देखि देबो ना ताहले भी हे जीवो हां तुम जेमि कहउछो सपोज आसिला गोटे टॉपिक को एनी टॉपिक हला आरटीआई ऊपर क्वेश्चन अछि तो आरटीआई रो तुम बेसिक इंट्रोडक्शन जानिचो आरटीआई रो कोन एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रॉब्लम कोन होछि यू नो एवरीथिंग
ओके तार डाटा कोन अछि रिसेंट डेज रे तो तमे ताको हैंडी रखि थाओ इंट्रोडक्शन रे जे क्वेश्चन को देखि किना तमे टिके इंट्रोडक्शन को होइतो मॉडिफाई करिवे पड़ी पारे ओके ताको लिखिबो ता सहित किछिटा कीवर्ड्स रखि थाओ आरटीआई को नै किना ओके तार किछि डाटा रखि थाओ सो से क्वेश्चन को तमे जस्टिफाई करि परिबो तोर एग्जाम देलो एटा फील होबन कि मु सबस्टैंडर्ड आंसर लिखुछु बोली किना मेनी टाइम यू फील कि आंसर टा और बेटर ही पारंदा मु जस्ट जबरदस्ती लिखुछि बिकॉज़ मो जाना नै इट इज अंडरस्टैंडेबल जदी क्वेश्चन किछि जाइन नो आइडिया ओके ताहले तमे किछि ना किछि टिके फांकी देकी आसीबो बट ए भले जदी क्वेश्चन आसिला सेटा करनी लास्ट टाइम बहुत सारा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आई विल शो यू लास्ट टाइम क्वेश्चन देखो प्लास्टिक पोल्यूशन पर क्वेश्चन थिला ता पूर्व वर्ष एटा बोधे 2022 रे ओके 2023 क्वेश्चन देखो छ हम ओके देखो रिन्यूएबल एनर्जी पर क्वेश्चन अछि दिस आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस एनर्जी देई जे सिलेबस रे किछि बाहरु से पकोनी ओके स्पेस सेक्टर स्पेस वाज अ टॉपिक सेम क्वेश्चन पिला को करई छी पूरा पूरा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन समर विद्या अछन एठी ए क्वेश्चन मु करई छी पिला को आमे डिस्कसिंग कर दै छी एटा को हमर पिला भी डिस्कशन करछन एटा सेम सेम क्वेश्चन गवर्नमेंट बजेटिंग आमे पूरा डिस्कस कर ओडिसा बजेट क्लियर आमे क्लास डिस्कस कर तार वीडियो मु पकई सार छी ओके जोटा कि हमर एप्लीकेशन पाई जीवो गवर्नमेंट बजेटिंग हमर पढ़ा है छी देन तमरो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो सिलेबस रो पॉइंट उठै छी डायरेक्ट चारटा तीनटा कम्युनिकेशन सेटे पूरा लिखि छी के तीन चारटा हमरो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट कहि ना आ से सेटा में पकई छी देन हला लैंड रिफॉर्म सिलेबस रे अछि कि नै टॉपिक अच्छी सिलेबस रे टॉपिक 33 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सिलेबस अच्छी अन्य से किछि बाहर पकोनी तुम देखो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी कंजर्वेशन बोले डायरेक्ट टॉपिक सिलेबस अच्छी ना नहीं बट तुम कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट बोली ना एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑफ द इंडियन सिटीज अर्बन प्लानिंग ए सब क्वेश्चन गुडा आउ थरे पकेबो देखो ए सराउंडिंग से बुलिबो से किछि बाहर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बोली डायरेक्ट लिखा सिलेबस रे तो I will show you the syllabus also just don't doubt होचे okay analyze the NGOs and biodiversity conservation है NGO रोल कोन बोली पचाउ छी एटा गवर्नेंस रे भी अछि एथरे भी अछि किछि एग्जांपल लिखिबो ता परे हला गवर्नमेंट पुडे सरेंडर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एटा डिस्कस करबा NIA विषय रे आमे एटा डायरेक्ट नो किंतु CVC NIA एडा सो इंटरनल सिक्युरिटी रे NIA गोटे इंपोर्टेंट जोटा कि हमर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जोटा बनि छी हमर टेररिज्म विंग पय बोलिका ता छडा से टेररिस्ट रिलेटेड सब एक्टिविटी मध्ये गोटे अमेंडमेंट हेची सब एक्टिविटी की भी से इन्वेस्टिगेट कर परियो नॉट ओनली इज कंसंट्रेटेड टू टेररिज्म बट एबे वर्तमान से तमरो ड्रग ट्रेड हे गला ट्रैफिकिंग हे गला ए सब को मध्ये तारो विंग के एक्सपांड हे जे बिकॉज़ दे आर आल्सो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स टेररिज्म तो ए जिंसटा भी तुम जानिथिबो एटा होय तो तुमरो डायरेक्ट सिलेबस NIA बोल लिखा है किंतु इंटरनल सिक्युरिटी एजेंसी इंडिया रे सिक्युरिटी एजेंसी टा उठे ओके दिस इज द नेशनल पुलिस NIA होछ हमरो टेररिज्म विंग टा IB एगुडा सब हम सिलेबस रे ही टॉपिक बोली सिलेबस डायरेक्टली मेंशन नाही बट दे आर इंटरनल सिक्युरिटी पार्ट अछि ओके साइबर सिक्युरिटी फोर्सेस ऑफ एजेंसी अछि ना सिक्युरिटी फोर्सेस ऑफ एजेंसी तो तुमरो मैक्सिमम कंट्री अभी तो ए सब जिंस गुडा तुमरो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किछि बड़ नाही because cyber slavery is a form of modern exploitation that begin with online deception and involves into physical human trafficking okay question that is slavery or slavery okay slavery definition से तो मिस्टेक नहीं और cyber से तो मिस्टेक नहीं definition यार मैं पढ़ूँ तुमको cyber slavery is a form of modern exploitation that begin with online deception and involve into physical human trafficking एटी कौन बुझियार अच्छे स्कैम कंपाउंड और स्कैम माने तो बुझछ समझते स्कैम कंपाउंड समथिंग रिलेटेड टू एटा स्कैम होचे ओके तुम जदी याकु ने प्रिपेयर करछो कहीं ना याकु ने कि हमें रैंसमवेयर ए सब साइबर बुलिंग बहुत जिंस हम प्रिपेयर कर छथिलु लास्ट ईयर एमिति का मोर 10टा टॉपिक रो नोट से तो शेयर कर देथिली
ओके से जिनस ही एटी लिखार अच्छे कहीं जो तुम टॉपिक चेंज होची या माने किसी स्पेशलाइज जिनस जते थाए हुए तो तुम सेटा जाइन ता बोले एटा नुह कि तुम टोटली छाड़ दे परिबो टोटली छाड़ीबनी है लिखी आसो जहाँ पढ़े ताको लिखिक आसो दे आर सब्जेक्टिव टॉपिक्स आ तुम जदि एग्जैक्ट जानिछ तो भल कथा को एटी कॉज इफेक्ट डायग्राम तो करियो हां काई करियो देखो डायग्राम बहुत करिवो मु कहूची डू नॉट मिस डायग्राम बहुत करिवो कॉज इफेक्ट डायग्राम हे गला तमरो से जो पाई चार्ट वाला डायग्राम हे गला किबा तमरो जो हमर होची वैन डायग्राम हे गला ए सब डायग्राम रे तुम रिप्रेजेंटेशन करिवो जदी और टिके तुमको से माने बुझी परिबे कि यस दिस पर्सन इज क्वाइट क्लियर ओके तो डायग्राम एड़ा करियो पछ घंटा दबनी जति कि आउछ तुम करिवो देन आथो से फ्रेश वाटर तो फ्रेश वाटर टेक्नोलॉजी एटा सब प्रीवियस और यूपीएससी क्वेश्चन हैला देन हैला इंडस्ट्रियल पॉलिसी पोस्ट लिबरलाइजेशन याको भी हम डिस्कस करचंते बहुत थरा आ एटा सिलेबस रे ही अछि एलपीजी पार्ट एलपीजी रो कोन इंपैक्ट होची देन क्रॉप पैटर्न डायरेक्ट फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टार्ट करिवो क्रॉप पैटर्न टॉपिक एग्जामिन इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स ओके प्रिपेयरनेस ओडिशा से प्रिपेयरनेस तो यही पॉइंट गुडा जहां जहां पढिছে सेही थुर तमर हे होची आंसर किछि गोटे माने एमति नुह कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स किछि पढिछि किबा न लिखि पाला वाला जते भलसे पे कहूची सेही टॉपिक पढिबो तमे टिके प्रिपरेशन को ध्यान दिए सेही टॉपिक गुडा ही पढिबो पढगला ओके दिस क्वेश्चंस विल कम तुम ताउ टाइम देवा पड़ो टिके गोटे सेकंड रो देन हमर अछि बजेट और इकोनॉमिक सर्वे रो डायरेक्ट मु क्लास करै छी ताकू भी तुम देखि देबो क्वेश्चन भी सब माने एंशिएंट वन की मॉडर्न वन भी हम प्राय सब क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस करिछे ओके से सब देखिबो तुम जहां जहां सिलेबस देखौ छी से सब जिंस हमर ऑलरेडी हमर एठी अछि ता सहित जहां जहां मटेरियल मु मझे मझे शेयर करछि ग्रुप रे ताकू भी टिके ध्यान दे देखि दथो तुम look at here एग्रीकल्चर देखो फर्स्ट टॉपिक होची मेजर क्रॉपिंग पैटर्न कैन सी समझ स्क्रीन दिखाउ छी ना फर्स्ट टॉपिक ओके इरिगेशन स्टोरेज अच्छा फूड प्रोसेसिंग थिला ना ई टेक्नोलॉजी ए सब क्वेश्चन आसी ऑलरेडी डिस्कस करछि बेले सेबा बारंबार जे पढिबो तार मन रहबो ओके देन सब्सिडी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिवैम्पिंग फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज देखो तळे एठो अछि फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज then conservation environmental pollution degradation environment impact assessment topic पूरा जहां दिया से आसी disaster management in the country and the state आसी left wing extremism ए सब विषय डायरेक्ट क्वेश्चन आसी ओके security challenges in their management border areas linkage organized crime and terrorism okay terrorism असला माने NIST आसी हमरो various security forces and agencies in the country and Odisha. I will give you questions today on environment जो रहला हमर सिक्योरिटी ऊपर साइबर सिक्योरिटी लिखा अछि रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी बहुत सारा टॉपिक्स अछि देन तमर साइबर सिक्योरिटी सॉरी सिक्योरिटी ऊपर आ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊपर आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस देखो मेंशन अछि आईटी स्पेस तळे पूरा मेंशन अछि देखो अछि टॉपिक सेटू देला छै ओके बायोटेक्नोलॉजी अच्छी नानो टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स कंप्यूटर्स ए सब जिंस सिलेबस रे अच्छी सो से किछि बाहर तुम पकोनी ओके लैंड रिफॉर्म देखो मेंशन अछि लैंड रिफॉर्म क्वेश्चन आसिला इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन क्वेश्चन आसिला ओके इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा छि एनर्जी रो क्वेश्चन आसिला कि नै फर्स्ट क्वेश्चन एनर्जी क्वेश्चन दै छि देन पोस्ट रोड क्वेश्चन अछि रोड क्वेश्चन दै छि तुमको ओके गवर्नमेंट बजेटिंग रो क्वेश्चन आसिला
ओके इंक्लूसिव ग्रोथ रू क्वेश्चन आसे पूर्व तो यही सब टॉपिक रू क्वेश्चन आसे तुम किसी बाहर क्वेश्चन दरकार नहीं ओके यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग सिमिलरली तुम GS1 GS2 भी ओनली सिलेबस रो से टॉपिक दोउची बिले जमा एथि तुम किछि माने ये वरीड हवा दरकार नहीं हां GS1 रे कोन सिलेबस बहुत बड़ा होची से माने टॉपिक गुडा कि किंतु कितरा पूरा लेफ्ट आउट करछ किछि टॉपिक रो बारंबार दोउची सेगुडा गुडी देखियो ओके एग्रीकल्चर सिमिलरली तुम ए तो जिंस आई साइंस एंड टेक रो आउ तुमको इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन देबी ताकू ये सॉल्व कर करू तुम आउ टी बुझा पड़ जियो ओके देन तुम रहला प्रिपरेशन ओके हाँ शॉर्ट नोट रखा दरकार सब इंपोर्टेंट हो बारंबार लिखिबो हेले हाथ को जते चलेबो एग्जाम रे सेते तमरो माने बस की इजी हो तुम एबे जिंद को मोर यू ब्लीड इन द बैटल जो प्रैक्टिस द लेस यू कोन द मोर यू प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द ऑन द बैटलफील्ड कोन तो एबे जते प्रैक्टिस करथो जते पेन जते खाता सराई थिबो એટલે आई ऑलरेडी गिव यू टारगेट्स की जो मोर नोट देजी तार सेति 7टा इनटू 1400 पेज 1400 पेज तुम हारियो जदी एग्जाम जाई तुमे किछि लिखि परियो जदी डबल दी थर सारी परियो देन तुमर एग्जाम आउरी भलो हबो हैला क्वेश्चन आंसर कमी नै मु तुमको एग्जाम पर्यंत क्वेश्चन देई जारथिबी तुमको पूरा एसे भी लिखुथिबी ऑलरेडी एसे तो लिखिछि से एसे गुडा फॉर्मेट लिखिछि तापर वीडियो बनैछि केमता को मन रखिबो केम तुम इजीली करिवो ओके सब जिनस बैच रे पूरा मेंशन हेगी अछि ताको गोटे गोटे करे देखिबो दरकार पले 2 थर देखिबो 3 थर देखिबो किंतु करिक ना सारो सती ओके सती सार देला तमरो ए वर्ष ट्राई करो दिस 50 डेज लास्ट के आओ दरकार नै ए सिविल सर्विस पई ओएस में प्रिपेयर होबा राइट यूपीएस में लागबो तापर यू विल गेट 3-4 मंथ्स आफ्टर दैट कैन फेब्रुअरी एग्जाम से गेला माने मई 24 की 26 में जाके अछि तमरो की के थिबो तमरो यूपीएस प्रीलिम ओके टिल देन तम पाखरे 4 मंथ्स रो टाइम फेब्रुअरी मार्च एप्रिल मे यस पाखापाखि मोर देन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स पाखापाखि तुमको टाइम मिल जू तापे पढ़िया पे आ सेटा बसे क्लियर करियो आ या पे एते झंझट आ पड़िबोनी तार मेंस प्रिपरेशन भी गुड टाइप रो सरी गेला तुम भाबियो ओके आ कर कि डाउट रहले कि जमन मेंस दोचो कि मैं आगु दबो एग्जाम में रेडी आ हेल्थ होजी सब इंपोर्टेंट हम कहूजी आ थोर कहूजी बारंबार कहूजी इंपोर्टेंट इज हेल्थ देह टिके खराब होला तमे लिख परियोनी एग्जाम टा दीदी रे सिटिंग हबो यू विल रीच इन द एग्जाम हॉल बाय 8 o'clock मॉर्निंग 8 o'clock से सितो एमती ही होतो ओके 8 o'clock पहुंचे पे पड़िबो तमे पहुंच की पुनी तुमको एग्जाम लिखिया पे पड़िबो एग्जाम 3 घंटा लिखिबो 3 घंटा लिखला पर तुम ब्रेक रे खाइ परिबो न खाइ परिबो पुनी 3 घंटा लिखिया पे पड़िबो सो दिस शुड बी द दिस इज द योर शेड्यूल तो एबे फुल लेंथ टेस्ट हम स्टार्ट हो एडा सरी गला पर तो फुल लेंथ गुडा तुम लिखिबो हला 3 आवर्स बस लिखली जागी ना तुम प्रैक्टिस हो एबे मात्र कम करै छी आहुरी क्वेश्चन लिखेबी मोर 300 क्वेश्चन लिखेबी तुम मन को ओके तो ता अनुसार प्रिपेयर करो जो जो शेड्यूल मु देई छी से आउट शेड्यूल मु जारी करू छी फुल लेंथ पे गया पर सरी गला पर तो फुल लेंथ पे तमे वर्तमान टिके प्रैक्टिस करो ओके और टॉपिक्स भी देबी से टॉपिक रो नोट भी देबी से नोट को तमे बारंबार प्रिपेयर करो जाको जो नोट दरकार मते कहि देबो कहना व्हेन यू आस्क मु सेती तुमको इजीली प्रोवाइड कर परिबे ओके सो कम टू टुडेस सेशन एटा सरला we'll start science and tech and internal security for today's session